Vidya, and it's a pleasure to be your host for this enlightening workshop. Before we delve into the details of this session, let me take a moment to introduce Legal Vidya to you all. Founded in 2021, Legal Vidya, where the legal journey begins with a flourish. More than just a platform, Legal Vidya is a compass guiding law students through a realm of boundless opportunities. It has been a beacon of knowledge and guidance for individuals interested in the field of law. It has consistently strived to create a platform where the legal enthusiasts can nurture their passion, enhance their skills, and prepare themselves for a successful career. In the legal profession, it is a one-step destination that unfolds a world of workshops, webinars, internships, and a coveted chance to get published. It's not just in platform, it's a rendezvous with your legal aspirations. Now, let me introduce our distinguished speaker, the visionary leader behind Legal Vidya, Ms. Sakshi Sharma. She is a dynamic legal professional who has dedicated herself to the empowerment of aspiring lawyers and legal enthusiasts. With a profound passion for legal education, Sakshi has tirelessly worked to bridge the gap between academia and practical legal skills. Her commitment to nurturing the next generation of legal minds is evident through Legal Vidya's innovative webinars, workshops, and educational initiatives which aim to provide invaluable insights into the legal profession. Ms. Sakshi Sharma's visionary leadership has made Legal Vidya a cornerstone in the journey of countless individuals seeking to excel in the field of law. And first of all, I would like to request you all to please keep your mic on mute and keep your video off. If you have any questions, please ask the lead speaker at last when the session will end. And it is necessary for you all to please fill the feedback form after the end of the session. It will be shared with you in order to receive certificates. And here's the beginning of the session. Get ready for the legal research adventure. We are diving into the captivating world of legal intricacies, unlocking this research, unlocking the secrets of research methodology, unleashing our creativity in legal writing, mastering the art of citation like a legal wizard, and boldly facing the plagiarism challenge head on. Let the legal exploration begin. Together, we can learn, grow, and contribute to this ever evolving landscape of the legal field. Thank you, and let us begin. Over to you, ma'am. Executive members introduced me instead of Paris. It was really great. And you have done a really good job, let me tell you that. So, congratulations on that. And welcome, everyone. I'm Sakshi, and I look forward to our session. So, firstly, before we begin, tell me how are you all doing today? It's festive season. I hope you all are excited and ready. So, tell me how are you all? You can just write it down in the chat box, um, and I'll be reading. If the host allows, please let them turn on their mics so that we can have an interactive session rather than a bland one. So yeah, I hope you're all doing fine now. So in this section, basically, I'll be discussing on research and article writing, and just tell me once my screen is visible. Kanishka, I hope you're able to turn on your. Is my screen visible? No, ma'am. Okay. Just give me a second. Let me reconnect. Now it's visible, ma'am.
Okay, great. Thank you so much. So let's begin with our session. Welcome, everyone. And since we are discussing on research, first let me ask: does anyone know what research is? What legal research is? Just write down your answers in the chat box. I'll give you 2 minutes. 1 minute, I believe that's enough because research is not doesn't have an elaborate definition. So whatever your point of view on research is, just write it down in the chat box. And I'm interested in knowing what you all think legal research is, and what do we do when we say that I'll be doing legal research on this XYZ topic. Write it down in the chat box. Ma'am, your screen sharing has stopped. Yeah, I have stopped sharing so because there it's written what legal research is. So yeah, just tell me what you think legal research is. Let me see if I can unmute. Unmute your mics now. So, anyone, what legal research is? Any idea? Does anyone have an idea? Hello, Ayushi, ma'am. you've My name is raised your Kev. hand. Yeah, please continue. Yeah, ma'am. Legal research is a research where we go through the uh, certain research about the legal cases and legal social elements which is surrounded our cases, and it's a part of review any kind of legal sources. Yeah, kind of true. So, let's just begin the session and let's delve into the concept of legal research and article writing. And I'll also be sharing with you all what we expect when I say that we'll be writing articles, when we say we want you to submit an article on a particular topic. Let's begin from here. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. So, yeah. So when we come to research, so research is basically the creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept methodologies and understanding. So basically जब हम research की research में हम या तो कोई नया information ढूंढते हैं या फिर जो already existing information है उससे हम नए concepts generate करते हैं उससे किसी चीज को समझने के लिए एक बेटर न्यूअर मेथडोलॉजी डेवलप करते हैं what legal research does it allows you to get more clarity about the issue at hand and anticipate different arguments that may come up in court, give you more confidence and present your case. तो जब हम लीगल रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च सब करते हैं whether you're a law student, you're a teacher, you're into academia, or if you're into even if you're a lawyer or if you're a judge. तो सब के सब जो है वो लीगल रिसर्च करते हैं. एडवोकेट्स क्यों करते हैं? एडवोकेट्स करते हैं सो दैट दे कैन विन देयर केस. स्टूडेंट्स क्यों करते हैं? अपना असाइनमेंट्स के लिए, जब उनको रिसर्च पेपर लिखना होता है उसके लिए. टीचर्स क्यों करते हैं? पढ़ाने के लिए. जजेस क्यों करते हैं? जब उनको कुछ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू गिव अ जजमेंट, दे मस्ट नो द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इसलिए वो रिसर्च करते हैं. तो लीगल रिसर्च बेसिकली gives you more clarity at the issue at hand and allows you to see from various perspectives कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं आपके सामने. अगर किसी चीज के फॉर्म में आप आर्ग्यू कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यू करोगे, राइट. लीगल रिसर्च बेसिकली गिव्स यू मोर क्लैरिटी कि दोनों तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू द टाइप्स, काफी सारे टाइप्स है लीगल रिसर्च के. नॉट सेइंग there's just one or there's just two, बट यहाँ पे हम लोग टू मेन टाइप्स की बात करेंगे, डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल. तो डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च जो है वो काफी थियोरेटिकल होती है और जो नॉन डॉक्ट्रिनल है इट इज मोर प्रैक्टिकल. डॉक्ट्रिनल रिसर्च इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी सोर्सेज लाइक
articles, commentaries, textbooks, information, etc. And non-doctrinal research is based on primary sources like surveys and case study. Doctrinal legal research में आप क्या करते हो? You basically go to your library, sit there and read various books and case comments and journals, etc. Non-doctrinal में आप क्या करते हो? You go into the field, you make questionnaire or you make survey papers and take surveys. That is what you do in non-doctrinal. Doctrinal research is more concerned with the question of what is law and studying it. Non-doctrinal में आप जो research करते हो, it is not only based on law. It contains questions of both law and its impact on the society. Say for example, मेरे पास topic है on let's say the CAA. Okay, so I have the topic of CAA. When I do doctrinal research, I'll only study the law aspect of it, कि law क्या बात कर रहा है when it comes to CAA. But when we talk of non-doctrinal, I'll also see how that particular law has impacted the society. Society पहले कैसे थी, उस law के आने के बाद क्या हुआ, क्या कुछ controversies हुई when that law was being implemented. नॉन डॉक्ट्रिनल में हम ये करेंगे. डॉक्ट्रिनल रिसर्च का हेंस स्कोप बहुत नैरो है, नॉन डॉक्ट्रिनल इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव. तो इट इज जनरली जब आप पीएचडी वगैरह में अपनी थीसिस लिखते हो, डिसर्टेशंस लिखते हो, तब आप नॉन डॉक्ट्रिनल ज्यादा अप्लाई करते हो दैन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च. नाउ स्टेप्स कमिंग टू द पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग. तो आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है? पहले आप अगर ये सीखोगे कि रिसर्च कैसे करनी है, तो आपका आर्टिकल राइटिंग भी अपने आप साथ में चलता रहेगा. तो पहला है व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन. तो जब भी हम कुछ बात कर रहे हैं अबाउट रिसर्च और अबाउट आर्टिकल राइटिंग, वी ऑलवेज हैव अ टॉपिक और अ क्वेश्चन. बेसिकली वी हैव क्वेश्चंस व्हेन वी डेवलप अ हाइपोथेसिस, तो तब हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन होते हैं. बट इन योर केस यू आर असाइंड वेरियस टॉपिक्स. से फॉर एग्जाम्पल किसी को मिला होगा कि XYZ लॉ कमीशन पे लिखो, या फिर एनालाइज पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज say for example analyze the three bills of the criminal amendment bills that are suggested by the government. Or you might have the question, any question, XYZ question. So if you are having a question or a topic at hand, first what you must do is you must try to understand that question. So what I mean by understand is you need to go in depth on that question to understand it. So जब हम अंडरस्टैंडिंग रिसर्च क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट यू मस्ट डू टू अंडरस्टैंड इज द पॉइंट, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करे क्या क्वेश्चन समझने के लिए. सो व्हाट आई सजेस्ट यू डू इज यू टाइप योर क्वेश्चन ऑन इंटरनेट, बिकॉज जनरली लोग आजकल बुक से ज्यादा इंटरनेट की तरफ भागते हैं. ओके, इट इज मच मोर कन्वीनियंट एंड ईजी, नो डाउट. सो type your question on internet. Say for example my question is on the first law commission report. I'll type that on internet. मुझे क्या मिलेगा? मुझे सारे sources मिलेंगे. I'll get the official law commission report जो निकली थी. I'll get various articles on it. I might also find 2-3 research papers on it. Okay, what I'll do to understand my particular question or topic is read them. But तब तक पढ़ूंगी उसको, एक बार पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता. Please get that in your mind. Even if you are gonna go to moot courts, you're all first year students, I know you might be very interested and excited in going to moot courts. Trust me, even when you have a moot problem at your hand, उसको अपना research question को चलो, let's compare that. Okay, मान लो आपके पास एक moot problem आई है, ठीक है. आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार आपको एक नई चीज पता चलेगी. तब आप अगर उसको एक बार पढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, ओके दिस रिलेट्स टू दिस. ओके, इसमें दूसरी बार पढ़ोगे आ जाएगा कि jurisdiction क्या है. तीसरी बार पढ़ोगे you will get more clarity on the facts, more clarity of the issue at hand. जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी नई नई चीजें पता चलेगी. That times you'll understand various aspects of it. So what you must do to understand, read your topic in depth and thoroughly. Go dig as deep as you can and read everything related to it. Okay, then identify your headings and subheadings.
नाउ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे की स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. नाउ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. चलो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो. यूल ऑब्वियसली राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, यूल राइट योर कीवर्ड्स, यूल राइट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी. Up, for example, my topic is on, say, let's talk of something criminal conspiracy. ठीक है. Okay, let's talk of sedation, for example. ठीक है. Sedation दिया हुआ है आईपीसी में. मैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगी कि sedation का मतलब क्या होता है, इसको कौन से, फिर उसके बाद मैं अपना सेकंड हेडिंग लिख लूंगी. First, I'll write my introduction where I'll introduce the topic. So my topic is sedation. I'll introduce the whole topic. Then I'll talk about the history of sedition law in India. So let's talk of Britishers के टाइम पे sedition law था या नहीं, अगर था तो क्या होता था तब, क्यों इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था. Our penal code is very old. It's of 1860. So it was implemented back then. So why it was implemented? Then I'll write that. उसके बाद I can write another heading on subheadings. Say for example, I write sedition under Indian Penal Code. ओके, दिस इज माय थर्ड हेडिंग. अब इसके सब हेडिंग्स में अगर आप आईपीसी के बारे में कुछ भी लिखते हो, तो कोई ऑफेंस के बारे में अगर आप लिखते हो, देयर इज ऑलवेज पनिशमेंट रिलेटेड टू इट, देयर आर एसेंशियल एलिमेंट्स रिलेटेड टू इट. सो आई कैन मेक अ सब हेडिंग और अ हेडिंग एसेंशियल ऑफ सेडिशन, essentials to constitute an offense of sedition. Then उसमें सब headings की ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए. I can write all of that. After that, what I can write is I can write various case laws relating to sedition. फिर sedition पे एक बहुत अच्छी law commission report है. You can write on that if you want to delve more into that topic and then write a conclusion. So आपके research पेपर में काफी headings and sub headings होंगे. लेकिन आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन भरने के लिए पहले ये अपना टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा. दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप टू writing your research article is understanding your topic nicely. Only once after you understand the topic you can identify your headings and subheadings. What you'll do after identifying your headings and subheadings, you'll make a rough and fill in information. So let me tell you something. अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको लगेगा यार let's postpone it to the last day and I'll do it then. Trust me, postponing it, yeah, you can do it in the last day, no doubt, but your article will not have everything. कहीं ना कुछ छूट ही जाएगा. So अगर कुछ छूट गया, अगेन जब आप अपने peers का आर्टिकल रिव्यू करोगे, you'll be like यार मुझे ये क्यों नहीं मिला. So keep whatever. Say for example you are having 7 days in your hand. एक दिन या 2 दिन या 1.5 दिन जो भी आपको सही लगे, दोनों यार रीडिंग स्पीड. सो सबका अलग अलग होता है. कोई 1 दिन में सब कुछ कर लेगा, कोई 2 दिन में करेगा. सो कीप 1 or 2 days in your hand ताकि आप अपना टॉपिक अच्छे से समझो एंड यू कैन आइडेंटिफाई हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. सो व्हेन यू रीड योर टॉपिक आपको समझ आएगा कि आपको क्या लिखना है और आपको क्या कन्वे करना है अपने आर्टिकल के थ्रू. Once you have understood that, then start digging more deep. Case laws ढूंढो, relevant sections ढूंढो, उसको किसी और law से connect करना है तो वो करो. ठीक है. Find that and then what you do, fill in that information. सबसे last day, say for example it's your 6th day, वो 6th day रखो revision करने के लिए, edit करने के लिए. Revising and editing your article is बहुत important. Say for example your article is complete, okay, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, but grammar mistakes है, spelling mistakes है, sentence का sense नहीं बन रहा है, कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है कि यार इसका इस वर्ड का यहाँ पे क्या यूज है. ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो आपका आर्टिकल कोई यूज का नहीं है. इमेजिन हमेशा ये बोला जाता है whenever you write a research article or present your arguments, तो 3 लोगों को आपकी बात समझ आनी चाहिए. First is a first year student, second is your teachers and third, मान लो आप जज के सामने आर्ग्यू करोगे, अपना आर्ग्यूमेंट रखोगे तो उसको समझ आनी चाहिए, और एक कॉमनर को. तो आपके केस में आप स्टूडेंट्स हो तो ऐसा आर्टिकल लिखो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी समझ आए, जो आपके टीचर्स देखे तो उनको भी लगे वाह यू हैव रिटन अ ग्रेट आर्टिकल. एंड इफ एनी लेमैन, दैट इज समवन हु इज नॉट रिलेटेड टू लॉ, ही आल्सो रीड्स इट, तो उसको भी लगे कि यार मुझे तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया. ऐसे आर्टिकल लिखना आपको. सो दैट इज व्हाई रिवाइजिंग एंड एडिटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ what to remember when you're writing your article.
पहले तो length of the article. So anytime you go into a competition or anytime you go for internships, you're always assigned a particular length that your article should be 2000 to 3000 words or 2000 to 5000 words. So always look at that length. हमेशा कोशिश करो जो lower limit है. Say for example it's 2000 words, try to write as close to that word limit as possible. If you're going to write 5000 words, well and good, but try to reach the at least lower word limit. If it's 1700, 1800, 1900, it's fine. 2000 नहीं भी गया तो ठीक है, बट ऐसा मत करो कि 1000 वर्ड लिख के छोड़ दो. that that's more of an actually, so it's not an article. Okay, so always look at the length of the article, then the language and grammar. Now, being lawyers, especially the what youngsters do is they fill their article with Latin maxim and legal terms. Chalo, where it is necessary to use them, use them. But unnecessarily legal terms use mat karo. Keep your language of your article as simple as possible and the grammar must be perfect. So, if you're writing an article, read it again and again to ensure कि language सही है and grammar सही है. Then scannability. Scannability is really important. At the end of this PPT, I'll show you two articles, and you all tell me which one looks better. दोनों का content similar होगा, and सब कुछ सिमिलर होगा उसमें, बट one will be better and other one will be like यार इसको मुझे नहीं पढ़ना है. So you guys will tell me which one that will be. तो उससे आपको स्कैनेबिलिटी का अच्छे से पता चलेगा. स्कैनेबिलिटी बेसिकली मीन्स कि अगर मेरे पास 10 मिनट है, मुझे एग्जाम में जाना है, मुझे इंटरव्यू में जाना है, मैंने आपका आर्टिकल खोला, आपके आर्टिकल में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है जिसको देख के मैं पता लगा सकती हूँ कि आई वॉन्ट टू रीड इट और नॉट, or whether this article is of use for me or not. Scannability only comes when you mention your headings and subheadings clearly. Scannability basically means at a glance, if I look at your article, will I understand something from it, or uh, uh, will I will I understand if it is useful for me or not? That is the point of scannability. Your article must be scannable. Then explaining legal jargons. If you use legal terms, always explain them. They must not go unexplained. And your introduction and conclusion, they are two most important parts of your article. If your introduction is not catchy, no reader will stick to your article and read it. And if the conclusion is very bland, it will make no sense. So always ensure to write a good introduction and conclusion, and at the end ask for reviews. Ask your teachers, ask your friends, ask your, if anyone in your family is of law background, ask them, ask your parents to read your article and ask them what all changes I can make, because there's always your brain will only think to one side of the point, and there might be someone else who might have another type of understanding, who might have another perspective. So take their perspective into account as well, ask for their reviews, and if you think कि इससे मेरा article सही हो जाएगा, incorporate them in your particular articles. Then the format of your article writing. There must be an abstract, there will be keywords, introduction, body, the use of authorities, and conclusion. So, abstract and keyword. When we talk of abstract and keyword, as abstract is basically the first part of your article, and after that there's keywords. Keywords basically refer to a few related words to your article. Say, for example, my article is on sedition. I can write the IPC in my keywords. I can write 124A. If I'm referring to a law commission report, I can write that number of that law commission report. तीन चार keywords. Keywords basically make your article more friendly for the readers. Then the abstract and introduction. Abstract is a concise summary of the entire research paper, and it provides a brief overview of the methods you have used, the results, and the conclusion that you have derived from your particular research. जो introduction होता है, introduction is the opening of your research paper, and in introduction you introduce your topic and state the problem or question. So abstract and introduction are basically
many times confused कि यार abstract में क्या लिखे, introduction में क्या लिखे. Don't do the mistake that many people do, that is abstract और introduction को एक ही समझ लेना. नहीं, एक ही नहीं होता ये. Abstract basically आपका पूरे रिसर्च पेपर का एक ओवरव्यू होता है कि आप इस पेपर से क्या डिस्कस करना चाह रहे हो. जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. एब्स्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन 100 to 300 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स, उससे ज्यादा लंबा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है कभी. इंट्रोडक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा पैराग्राफ्स में लिखा होता है, और कभी 2 3 4 5 6 7 10 पैराग्राफ्स. इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ काफी वेरी करती है. जो एब्स्ट्रैक्ट होता है एज अ ऑलरेडी स्टेटेड समरी होता है, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली पूरे आपके जो टॉपिक है उसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हो. देन द बॉडी. अब बॉडी में क्या लिखना है. नाउ व्हाट यू राइट इन योर body differs from the topic to topic. If your topic is related to, if your topic calls for history of a particular say subject, then you'll have to write the history. If it calls for writing case laws, you'll have to mention case laws. The body always differs. Generally what you write your introduction, you write history of the particular topic, you write various laws relating to it, you can write the international perspective of that particular topic, you can write case laws in your body. अब case laws जो आता है वो use of authorities में होता है. Why do we use authorities? अगर मैं कोई केस साइट कर रही हूँ, मैं कोई लॉ साइट कर रही हूँ, then why do I do that? I do that to back up my information कि this information is from a verified source and this information is true. That is why always try to use as many authorities as possible. Don't use unnecessarily, but जहाँ जरूरी हो, जहाँ केस लॉस डालना जरूरी हो, जहाँ पे कुछ से फॉर एग्जांपल यू राइटिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ में हमेशा अगर आप डेटा चाहते हो तो गो टू एनसीआरबी, दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसका डेटा उठाओ. use that in your authorities. Use various books, use what various authors said, use them in your authorities. And then conclusion में आपने अपना आर्टिकल लिखा, इतना रिसर्च किया, तो आपने क्या कंक्लूड किया, आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फॉर एग्जांपल सेडिशन, क्या सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए, क्या सेडिशन लॉ को अभी भी इंडिया में रखना चाहिए, क्या इसका मिसयूज होता है, क्या जो गवर्नमेंट है या फिर जो पुलिस वाले हैं वो जबरदस्ती लोगों पे चार्जेस लगा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है. व्हाट हैव यू कंक्लूडेड आफ्टर डूइंग सो मच रिसर्च विल गो इन योर कंक्लूजन. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्लेजरिज्म. तो जब मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, आई टॉक्ड ऑफ कि लीगल विद्या की काफी स्ट्रिक्ट प्लेजरिज्म पॉलिसी, वी डोंट अलाउ प्लेजरिज्म मोर देन 10%. So what is plagiarism? Basically, you use any other author's work, I'm sorry, you use any other author work without giving them due credit. That comes under plagiarism. It's very unethical. अब मान लो आपने सालों की मेहनत करके एक रिसर्च डेवलप की है एंड समवन एल्स जस्ट कॉपी पेस्ट एंड डज नॉट गिव यू क्रेडिट. मान लो कि ग्रुप प्रोजेक्ट है, 4 लोग ग्रुप में हैं, जिसमें से सिर्फ 3 जनों ने काम किया है, चौथे ने कुछ काम ही नहीं किया है, लेकिन क्रेडिट चौथा बंदा लेके किया. ऑब्वियसली यू विल फील ना कि यार काम तो मैंने किया है, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिला. तो that is what is that is a similar concept. So basically plagiarism occurs when you use someone else's work without giving them due credit. Now I cannot give you tips कि आप 100% plagiarism कैसे निकालो, but the first and most genuine thing is never intentionally plagiarize. प्लेजरिज्म बहुत अनएथिकल है एंड इट इज आल्सो एकेडमिक ऑफेंस इन मेनी केसेस. काफी बार लोगों पे केसेस और फाइन वगैरह भी हो जाते हैं व्हेन दे डू प्लेजरिज्म. सो ऑलवेज एंश्योर कि आपका वर्क ओरिजिनल रहे एंड इफ यू आर यूजिंग समवन एल्सेस वर्क ऑलवेज प्रॉपर्ली साइट देम. Use quotation marks and references. If you're directly quoting any other author work or you're directly quoting say from a judgment, then always use quotation marks to and provide proper citation to give credit to the original author and to avoid plagiarism.
पैराफ्रेज ओनली व्हेन नेसेसरी एंड इंक्लूड रेफरेंसेस। अब जब पैराफ्रेज की बात होती है, काफी लोगों को लगता है यार इसको पैराफ्रेज कर देते प्लेजरिज्म तो हट जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पैराफ्रेजिंग से आप उसी ऑथर के शब्द, उसी ऑथर के वर्क को अपने शब्दों में लिख रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, शब्द इधर उधर कर रहे हो, उससे प्लेजरिज्म नहीं हटता है। व्हाट यू डू, इवन इफ यू आर पैराफ्रेजिंग समथिंग, तो रेफरेंसेस में उसको इंक्लूड करो एंड एक्नॉलेज द ओरिजिनल सोर्स। अगर आप कोई फैक्ट ले रहे हो, से मैंने अभी एनसीआरबी रिपोर्ट की बात की थी, तो वो एक फैक्ट है कि इतने ज्यादा ऑफेंसेस रजिस्टर हुए इंडिया में कि इस पर्टिकुलर क्राइम के। व्हाट आई डू व्हेन आई एम साइटिंग, व्हेन आई एम रेफरिंग टू दैट फैक्ट, मैं उधर उसका साइटेशन लगाऊंगी। एनीथिंग दैट इज नॉट ऑफ कॉमन नॉलेज एंड यू आर यूजिंग इट, you must cite it. Then copy phrases with special caution if you're a non-native speaker. Now, if you're someone who's not good at English, or you're someone who's not good at सिर्फ even अगर आप किसी और लैंग्वेज में आर्टिकल लिख रहे हो, you're not good at that language, हमेशा ध्यान रखो कि आप क्या कर रहे हो. Don't just blindly copy something and paste it in your article. Always credit people for their ideas to avoid the risk of idea plagiarism. Now, it is essential to acknowledge the contribution of others by citing them and using their for using their ideas, concepts, or authorities. And lastly, and most importantly, I believe मैंने आपके सेशन में बोला था, don't use ChatGPT. The reason is that वो plagiarism free content कभी नहीं देता है. And even so, if you use ChatGPT, आपको खुद को क्या benefit होगा यार? So avoid using AI tools when writing for academic publication. तो जब आप artificial intelligence tool use करते हो for writing academic content, it poses a risk as it may lead to unintentional plagiarism. चलो ठीक है, माना आपने नहीं किया है, लेकिन आर्टिकल तो आपका ही है, आपने unintentionally सही लेकिन plagiarize तो किया है. It may lead to unintentional plagiarism or the generation of content that lacks your original contribution, which is obvious क्योंकि आप अपना article AI से लिखा रहे हो. It's generally best to rely on your own knowledge so as to ensure कि plagiarism ना हो. तो अगर आपको कोई चीज, मान लो चोरी करना बुरी बात है, ठीक है, लोग बोलते चोरी करना बुरी बात है, तो क्या करें भाई, चोरी नहीं करे तो सबसे पहला काम आप यही कर सकते हो कि कभी इंटेंशनली चोरी मत करो, कभी इंटेंशन ही मत रखो चोरी करने का, सोचो भी मत कोसों दूर तक कि यार मुझे चोरी करनी है, ठीक है. प्लेजरिज्म इज बेसिकली काम चुराना दूसरों का. तो चोरी मत करो. अगर आप किसी का काम चुरा रहे हो, किसी का काम यूज कर रहे हो, ऑलवेज गिव देम ड्यू क्रेडिट. हमेशा सोचो यार, अगर मेरा काम हो, मैंने इतनी मेहनत करी हो, और कोई ऐसी मेरा काम मतलब यूज करके ले जाए, तो क्या लगेगा मेरे को बुरा लगेगा यार. इट इज वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट. सो इट इज वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू कॉपी समथिंग फ्रॉम अदर्स. एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट कर दूसरों के आंसर्स कॉपी करने पे पनिशमेंट मिलती है, दीवार हो जाते हैं काफी बार बच्चे. सिमिलरली हियर, सो डू नॉट इंटेंशनली कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनीवेयर. अगर करने की जरूरत हो तो प्रॉपर साइटेशंस दो, उनको ड्यू क्रेडिट दो उनके वर्क का, और do not use AI for writing your articles because it will be of no help for you and the article will contain lot of plagiarism. अब citations. Plagiarism के बाद important बात करते हैं. Plagiarism में काफी बार mention कर दिया, reference दो, cite करो. क्या 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 होता है citation? तो बेसिकली जब आप किसी के वर्क को यूज करते हो, तो आप कुछ सोर्सेज यूज करते हो. मान लो बुक्स आपने सोर्सेज में यूज किया, मान लो आपने क्या बोलते हैं, आपने बुक्स यूज किया, आपने केस लॉज यूज किया, आपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट यूज कर ली, आपने इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स यूज कर लिए, आपने किसी दूसरे ऑथर के रिसर्च पेपर से कुछ यूज कर लिया. अगर आपने यूज किया तो आपको उसको साइट करना पड़ेगा. व्हाई यू मस्ट mention proper citation? The first point is to show your reader that you have done proper research by listing sources you used to get your information. Then to be a responsible scholar and student by giving due credit to other researchers. Then for the obvious reason, that is to avoid plagiarism by quoting words and ideas, to allow the reader to track down your sources.
So now, if I'm reading your article, then if I want to see कि यार ये चीज़ इस बंदे ने कहाँ से ढूंढी, if you cite that, it will be easier for the reader to go to the original source. So always do that. क्या क्या cite करना चाहिए? Facts, figures, ideas, or other information that is not of common knowledge. Then ideas, words, theories, or exact language that another person used in other publications. Then publications that must be cited must include books, books ke chapters, articles, web pages, theses, etc. Another person's exact words should be quoted and cited to show proper credit. So anything that is not yours must be cited. Good research and good writing will take you a long way when it comes to article writing. Um, at Legal Vidya, we follow the Harvard Blue Book 20th edition, as you can see, and your document भी आपको मिला होगा. Blue Book citations are very easy. Trust me on that because you generally refer to only cases and websites and books. So I'll be talking only of those three. You can see here if you're citing books, the first thing that you need to write is the volume number of the book, if there is any, then the author's name, then the title of the book, then the page number and publisher's name or and year of publishing. So let's talk of an Indian one. Here they have shown the citation to D.D. Basu, as you can see. So volume number kya hai? 2. Author's name D.D. Basu. Title of the book Constitution of India. Page number is 201 and year of publishing is 2010. So they have mentioned that. This is how you cite books. Cases are very easy because हम लोग generally ये use करते हैं. That is plaintiff, appellant or applicant versus defendant or respondent and the citation. Always while you're citing your cases, please mention the citation and please mention the correct citation. अगर एक भी word या number ऊपर नीचे हो गया तो citation पूरी गलत हो जाएगी. So always cross check your citations. And then statutes. Again, an important one. So first you write the short title of the act, then you write section, then this sign is being referred to section. Okay. So first write the short title of the act, then the specific section that you're referring to, then the number of the act, and then write acts of parliament and the year of the act and country's name. तो यहाँ पे इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात की है. So they have mentioned बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, then act का year 1949. Yes, a short title हो गया. They are mentioning section 3. So they have mentioned this symbol, that is the section symbol, and 3. Then act number 10. So they have written number 10, comma, acts of parliament. Year of the act, again 1949, country and abbreviation, IND, India. Constitution, similar. First you write India Const, that is Indian Constitution. Then mention the article that you're citing. So the cited article 1, then they have cited clause 2 of that particular article. So you can see clause 2. If it has been inserted by amendment or there has been an amendment, then you write amended by the Constitution, 8th Amendment Act of 2000. Then websites, articles generally cite नहीं करते हो आप लोग. So if you do, उसमें कैसे करना वो दिया हुआ है. Don't worry of that. और online sources. तो website की बात करते हैं. First you mention the name of the website, then उसका URL copy paste करो, and then the last date that you have visited it on. And if it's a dynamic website, that is, say for example, आप कोई news ही cite कर रहे हो, तो आप ये use करोगे. Say for example, you'll write the author's name, क्योंकि news के ऊपर हमेशा एक author का नाम होगा. Write that author's name, then write the name of the article, then write name of the web page, then write date of access, then the time of access, and then the URL. So this is basically on legal research and article writing. And आप सभी को legal research के topics मिले हुए होंगे, I'm pretty sure, and you must have started working on that as well. As far as I have the information, your topics are related to law commission reports. So I look forward to having those articles
And now, if you have any query regarding how you must write your article, or regarding how anything, then just write it down in the chat box and I'll answer them. Just write your queries in the chat box. Just write your queries in the chat box if you're. I hope you're able to write your queries. Controls are on. Oh wait, just turn on your mics and speak if you wish to. Anything that you're comfortable with, if it's writing, you can write it, or you can turn on your mics and speak. Man, yeah, I will share this PDF in your WhatsApp groups. I'll also be sharing the feedback form now, as Kanishka, I believe,